इम्फाइसीमा। तो टॉपिक का नाम है इम्फाइसीमा। इम्फाइसीमा, द WHO definition of pulmonary emphysema is a combination of permanent dilation of the airspace distal to the terminal bronchiole and the destruction of the wall of the distal airspace. ओके, तो इसमें क्या होता है, परमानेंट डायलेशन ऑफ द एयरवेज हो जाता है। परमानेंट dilation of air spaces distal to the terminal bronchiole and destruction of the walls of dilated air spaces। जो वॉल होती है इसकी एयर स्पेसेस की, वो भी डिस्ट्रक्शन हो जाता है उसमें। थस इम्फाइसीमा इज डिफाइंड मॉर्फोलॉजिकली वाइल क्रोनिक ब्रोंकाइटिस इज डिफाइंड एज क्लिनिकली। अच्छा, इसलिए इसको मॉर्फोलॉजिकली कंडीशन बोलते हैं इसी कारण से। सिंस द टू कंडीशन फ्रिक्वेंटली कोएग्जिस्ट एंड शो कंसिडरेबल ओवरलैप इन देयर क्लिनिकल फीचर, it is unable to label patient as predominant emphysema and predominant bronchitis. As mentioned in the beginning of this chapter, lobule is composed of 5 acne distal to a terminal bronchiole, and that an acnes consists of 3 to 5 generations of the respiratory bronchiole and a variable number of alveolar duct and alveolar sac. The WHO classification of pulmonary emphysema is based upon the portion of the acinus involved according to 5 type of identified. Okay, the number of other conditions in which the term emphysema is loosely applied are in fact in over inhalation. Okay, type of emphysema. Centracinar, nerve, paraseptal, irregular, mixed. ओके, 5 टाइप का होता है। सेंट्राइसिनर, पैराइसिनर, पेना, और फिर पैरासेप्टल, और फिर इरेगुलर और मिक्स्ड। ठीक है। The number of other conditions in which the term emphysema is loosely applied are in fact example of over-inhalation. Etiopatology.
The commonest form of the COPD is the combination of the chronic bronchitis and pulmonary emphysema. Chronic bronchitis, however, does not always lead to emphysema. All cases of emphysema too do not have changes to chronic bronchitis. The association of the two conditions is principally linked with the two common and important etiological factors, smoking and air pollution. वही इनका मेनली रीज़न है टबैको स्मोक एंड पहले तो जनरली इससे होता था, स्मोकिंग वगैरह से होता था एम्फाइसीमा, लेकिन अब देखा जा रहा है कि जो लोग स्मोकिंग नहीं भी करते हैं उनको भी एक कंडीशन डेवलप होती है. ओके, द अदर लेस सिग्निफिकेंट कंट्रीब्यूशन ऑफ द इन्फेक्शन वगैरह ठीक है, जेनेटिक फैक्टर से भी हो सकता है किसी किसी को. However, pathogenesis of the most significant event in the emphysema, destruction of the alveolar wall, ठीक है, destruction of the alveolar walls, and is not linked to the bronchial changes but is closely related to the deficiency of the serum. Okay. रीज़न क्या होता है इसका? deficiency of serum alpha 1 antitrypsin. protease inhibitor. protease यार कहाँ गया? hypothesis, ठीक है. The most common abnormal phenotype classic alpha 1 AT deficiency, ये रहने दो इसको, इतना नहीं है. The alpha 1 AT deficiency develop in adults and causes pulmonary emphysema in the smoker as well as non-smokers. Though smokers become asymptomatic about 15 years earlier than non-smokers. The other organ showing effect into the liver and which may be develop. अच्छा, इसका जो रहता है अल्फा 1 एंटीट्रिप्सिन की डेफिशिएंसी से लीवर पर भी इफेक्ट डालता है. ये ट्रिप्सिन डेफिशिएंसी develop jaundice, petoma. The mechanism of alveolar wall destruction in emphysema by electrolytic action is based on the imbalance between protease एंड एंटी प्रोटीज. जो प्रोटीज होता है और एंटी प्रोटीज होता है, इनका इम्बेलेंस हो जाता है, इसकी वजह से होता है ये. बाय डिक्रीज एंटीलेस्टिक एक्टिविटी.
ओके, न्यूट्रोफिल इन्फिल्ट्रेशन बढ़ जाता है, ठीक है। इन द लंग्स कोजिंग एक्सेसिव इलिब्रेशन न्यूट्रोफिल, ठीक है। देर इज इनफ एविडेंस टू सजेस्ट द स्मोकर smoking promotes emphysema both in the decreasing the amount of the antihistamine as well as increase the भाई मेनली स्मोकिंग इसका इफेक्ट होता है एम्फाइसीमा का। चाहे तो वो क्या करवाएगा, इलास्टेज जो होता है ना, एंटी इलास्टेज का, उसका प्रोडक्शन बढ़ा देगा, नहीं उसका डिक्रीज करेगा, डिक्रीजिंग द अमाउंट ऑफ एंटी इलास्टेज एज वेल एज इंक्रीजिंग द इलास्टोसिटिक प्रोटीज इन द लंग्स। स्मोकिंग क्या करेगा, ठीक है। ऑक्सीडेंट इन सिगरेट स्मोक आर एज इनिबिलिटी इन्फ्लुएंस, ठीक है। जो स्मोकिंग के जो अंदर वो होते हैं, सिगरेट के अंदर जो वो होते हैं पार्टिकल्स होते हैं, वो क्या करता है, जो एंटी इलास्टेज को होते हैं ना, एंटी ट्रिप्सिन होता है, उसको इनिबिट करते हैं। स्मोकर हैव टू 10 टाइम्स मोर फैगोसाइट एंड न्यूट्रोफिल्स इन देयर लंग्स एज कम्पेयर टू नॉन। जो स्मोकर्स होते हैं उनके में 10 टाइम्स ज़्यादा फैगोसाइट और न्यूट्रोफिल प्रेजेंट होते हैं उनके लंग्स में। thus they have very high elastase activity। ओके, तो इसकी ग्रोथ देख लेते हैं। ग्रोथ में क्या है, द लंग्स आर पेल एंड विद लिटिल वो, ठीक है, ब्लड कम होता है, पेल होते हैं, राउंड एज ऑफ द लंग्स, लंग्स माइल्ड कोज डायलेशन ऑफ द एयर स्पेसेस विद द लेंस, ठीक है, इतना तो हो गया। बबल द बुल्ले आर फिल्ड विद द, ओके। दे आर फॉर्म बाय रप्चर ऑफ एडजेसेंट एयर स्पेस, जो साइड वाले जो होते हैं एयर स्पेस वो भी हो जाता है, उनमें भी डिस्ट्रिक्शन हो जाता है, एल्वुलाई रप्चर हो जाती है। ओके, माइक्रोस्कोपी, due to dilation of the air spaces, dissection of the septal wall and the adventious and respiratory parenchyma, the होगा। बुल्लाई एंड bulbs are present, fibrosis is seen and chronic inflammation on the walls, ठीक है। ये हो गया एम्फाइसीमा इतना।